Good afternoon, everyone. We'll wait for 5 more minutes to let everyone join. Meanwhile, you can tell your friends to join this meeting, and we'll start off by two 2 minutes. I request you all to share the link with your friends so that they can benefit through this event. So just WhatsApp your friends and let them know about this event. We'll be starting the event in like 2 to 3 minutes. Let everyone join and then we'll start.
All right. I guess enough people have joined so that we can now start our session. So, greetings to everyone who could take time out of their busy schedules to join us today. I am Mohammad Abbas Ansari, the Vice Chair of IEEECS. I'd like to welcome everyone to the start of a series of roadmap sessions for getting started with technological domains. Today, our illustrious DSA and WebD teams have prepared a presentation on how to get started with data structures and web development respectively. I request everyone to keep their mics muted unless they have a query. During presentation, you can post your query as a message in the Google Meet chat box. At the end, we will have time for Q&A as well, so we can have a free-flowing discussions at the end. So without wasting any further time, I hand it over to the DSA team to conduct the session. So, hello everyone. I'm Sharon Miraj, the DSA team head of IEEECS. So, today's session, as you all know, will be a roadmap to DSA. So, when we hello, am I audible? Sharon, there's a network lag from your end. Okay, I'll change just a few seconds. I'll change my. Is it okay right now? Yeah, better. Okay. So, as I was saying, today's session will be about a roadmap. So, when we start with something, we have a lot of questions and we have a lot of doubts that need to be answered. And when we start something, that is the basic thing is to have a proper guidance and to know where we are going and if you're following the right path. So, this session will help you to have a basic idea that you should follow while learning DSA. And we'll try to answer as many questions that we can. And so if you're a beginner, this session will be beneficial for you also. But if you're an intermediate, if you're stuck with something, it will be beneficial for you as well. So it's not specific for beginners, it's specific for all. So, without much ado, I'd like to introduce you to the team members that will be the speaker for today. The first member is Huzaif Malik, and he will be followed by Shivang Mishra, Ujjwal Tyagi, Anas Jamil, Kovid Sharma, and then Shiroz Alam. So, over to you, Huzaif. Yeah. So hello everyone. Myself Huzaif Malik, and I am from Electronics and Communication branch. And we will be discussing about some basics of data structures and algorithms in this session. And if you are a beginner, then this session is definitely going to help you a lot. So let's begin. So the first question is, what are data structures? So data structure is just a way of storing raw data in a proper structured and organized way, so that you can perform various kinds of operations on these data in an efficient way. So basically, data structures are just about storing data. But the question is, why are we using data structures for storing data? I mean, if we just want to store our data, why can't we just create a simple file and put our data there? I mean, we can fetch it and we can put it simply in a file. But no, the reason is that it's not just about storing data. It's about storing it in a proper way so that in future, whenever we are required to perform any kind of operation on it, for example, suppose you want to fetch any kind of information from it, or you want to apply some queries on your data. For example, you want to append, prepend, delete, or you want to, even if you want to store your store data in somewhere else, then the cost for applying all these operations or all these operations should be less. I mean, your data should be stored in a proper structured and organized way so that you can perform various operations on your data in an efficient and effective way. And data structures provide us a way to store our data in the best way. So this is the reason why we are having the concept of data structures. I mean, it helps us in storing our data in a proper way so that we can perform various kinds of operations on it without facing any kind of difficulty. So the next question is that why data structures are so important nowadays. I mean, it's not like that it was not important before. It was important, but why it is so important nowadays that everyone is suggesting to do this. I mean,
सभी बोलते हैं कि डीएसए करना चाहिए, आपको डीएसए की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. So why is it? So we all know that our world is changing at a very fast rate. I mean, IT sector बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है and development process is at its peak. आप आज से 15 साल पहले का डेटा उठा के देख सकते हैं and you can compare it with today. आप क्लियरली देखेंगे कि बहुत डिफरेंस आ चुका है. I mean, there is a lot difference. आज से 15 साल पहले हमारे पास स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे. So technology is growing at a very fast rate. I mean, new technologies are getting evolved. So thanks to this development process, we are having the concept of dense or large data structures. I mean, we are getting so much data, and we also need to store all these data in a way so that we can use it whenever required. So that is the reason why proper knowledge about data structure is very important, and you should definitely have a good hold on data structures. I mean, आप कह सकते हैं कि DSA is must, आपको उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट है आपको इसके बारे में जानना. So this was some basics about DSA, data structures. This was about storing data. Next slide, please. Now the second part is algorithms. So algorithms are just a set of predefined instructions or logics, you can say, which you can use to implement a code which will help you to solving any kind of problem, or if you want to process your data. I mean, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसका यूज करके आप अपने लिए एक कोड बिल्ड कर सकते हैं जिससे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए. फॉर एग्जांपल, आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए. सपोज यू वांट टू बेक अ केक. सो फॉर doing that, you will be having some pre-written instructions, or you can say a recipe from which you can take help about how you can perform your operations on building a cake. For example, आप सबसे पहले उसमें मिल्क ऐड करेंगे और जो भी उसमें ऑपरेशंस होंगे आप उन सब लिखा हुआ होगा और आपको उन ऑपरेशंस को फॉलो करना पड़ेगा. So that recipe can also be categorized as a algorithm for baking a cake. In a similar way, if you want to perform any kind of operation on your data, for example, आपको कोई नया उसमें data add करना है, or you want to sort it, or you want to search it, you want to delete some kind of data from it. For all these kinds of operation, you will be having some pre-written instructions which you can follow to build your code in the most efficient way, which will help you for solving your problem. I mean, जो आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप C++ में कोड लिखते हैं, जावा में, पाइथन में, जो आप कोड लिखते हैं वो एल्गोरिथम नहीं है. एल्गोरिथम इज मोर काइंड ऑफ लाइक अ फ्लो चार्ट फ्रॉम व्हिच यू कैन टेक हेल्प अबाउट हाउ टू अप्रोच दैट प्रॉब्लम एंड build the most efficient solution out of and build the most efficient solution for that problem. So algorithms are basically some predefined instructions that you can follow for building a solution for your problem. So this was some basics about data structures and algorithms. Now Shivang will be taking this session further. So Shivang, are you there? Yes. Yeah. Hello, Thank good you. afternoon. Hello, good afternoon. I'm Shivang, and let's move on to applications of data structures and algorithms. Data structures and algorithms have a critical role in each and every field of the software industry. For example, in artificial intelligence, various data structures and algorithms are extensively used, ranging from simple matrices to genetic algorithms and neural networks. In game development, all major graph algorithms are used. Even in modern third-person shooters, which we take for granted, many ancient algorithms are used that has been developed around 50 or 60 years ago. They are still being used, like inverse kinematics is used for placing the hands and feet correctly. Graph theory is used for pathfinding, and decision trees are used for simple bots. Processing power won't make any processing power won't be sufficient for a game which is poorly optimized. And for proper optimization, we need to have a decent knowledge of data structures and algorithms. In web development, data structures and algorithms again prevent programmers from reinventing the wheel for standard problems. Performance optimization requires use of efficient data structures. In companies like Google and Facebook, optimization is really important, and data structures like graphs and compression algorithms are used extensively. In web development, data structure algorithms are used like this. In the same way, for blockchain development in Web3, you cannot just rely on any trendy languages like Solidity and Rust. Without proper understanding of algorithms behind proof of stake, proof of work, consensus algorithms, you will make severe mistakes. In the same way, data science uses many algorithms and data structures like
matrices, regression algorithms, etc. Operating system development further requires even advanced algorithms and data structures like priority queues, scheduling algorithms, and so on. Compiler design is a further more advanced topic, and it requires extensive use of data structures like tables, stacks, and algorithms of the graph theory and trees. Database design and management is also based on data structures as well. Heaps and hashes have to be used to optimize data retrieval and operations like CRUD, the create, read, update, and delete operations that we do on a daily basis in the database management systems. Signal processing is another interesting application of data structure algorithms, compression algorithms that I'll have to check. I don't remember the names of compression algorithms actually. So we can do the Q&A section after I'm done speaking. After that, signal processing algorithms like fast Fourier transform algorithm and matrices are used. And in cryptography, encryption, decryption, digital signatures, and so on algorithms are used. After this, some of you may have doubts regarding which language. Okay, so I think we should have the Q&A section after the other slides, or should I take the questions now? No, we'll have it together at the end of the session. Okay. So after this, I think I should go on to the slide of which language to choose for beginners. Actually, in data structure algorithm, it is a language independent topic, and people use various languages for data structure algorithms, both in the learning part and in implementation part. There are two scenarios. For example, in the first scenario, you have some background with programming, and you have experience in some of the backend languages like Java, C++, Python, etc. Then there is no urgent need to learn a new language for the sole purpose of solving a standard DSA problem. You can implement it in any language that you want. But in such a scenario, I would recommend Python because of its simplicity and short code snippets. While in the second scenario, that is the learning, if you are new to programming, or if you are new to data structures and algorithms in general, from a learning perspective, the language does matter, as you don't just have to get the work done, but instead you'd want to know more in detail about the implementations. For that, verbose languages such as verbosity means how much a language is readable, how much extra stuff you have to write, how clear the code is. For example, in Python, the statements are rather short, and reading the code is a little bit difficult for those who are not familiar with Python. But in languages such as Java and C++, they take more time to write. They have longer statements. They are really specific. The programmer has to specifically tell the compiler that what I want to do. So it's also easier to understand what the code is written. You can go into the intricacies of data structures and algorithms if you use such a verbose language, because it will be easier for you to understand how the algorithms are working. You won't miss any steps if you use a verbose language while in learning phase. While in implementation, you can use any language. Most professors usually recommend C++ because, as I said, it's more verbose, and in comparison to Java, it has more features. More features also provide you a larger responsibility as well. So I would not recommend it if you're not really going to be taking it for your competitive programming, etc. I personally prefer Java, and both are industry standard languages. You won't be having any issues if you choose either of those. And I won't recommend Python if you are new to programming, because you'll take some concepts for granted, and you may make errors in your basic concepts. Thank you. And now moving on to the other member.
Hello everyone, greetings. My name is Ujjwal Tyagi and I'll be addressing about the roadmap on how to learn DSA. By now we have understood what is DSA, why do we need it, but we are yet to understand how do we go about this learning process. As explained by Shivang, we need to learn a language, programming language first to get our hands into coding and start doing DSA. You can choose any language. DSA is basically language independent, but languages like C++, Java really gives you some advantage at learning on the initial level. They give you OOPS and different kind of object-oriented programming, namely, they give you different advantages. You can actually manipulate memory through these languages as they're very strong on its core. Next thing, what you need after learning a language, you can learn it from any YouTube tutorial or different resources that will be providing you at the end of the session. Then what you need is you need to install a code editor. Code editor basically means a place where you can write the code. You cannot simply write the code in your Notepad or Microsoft Word. You would need a code editor that would compile, understand what your code means. So for that, you would need a code editor. VS Code is a really popular editor. You can also use code blocks if you're going to use C++ or C or Java, in fact. So after we have installed the code editor, we start to learn the language, and along with that, we start to code. I cannot elaborate this enough, but you need to practice and be consistent. And you need to make any ID on any beginner friendly platform, namely HackerEarth or HackerRank. They're basically helpful in giving you some practice as well as some help in making you understand the concept. Next, you will start with learning time and space complexity. Now, time and space complexity is basically understanding how the memory works and how long your program takes to function. What I mean by this is that you need your program to be optimized. You don't want for a program to run for 10 minutes and then give you an output. That would be really slow. And because in industry right now, there is very heavy competition. If Mozilla starts to produce results faster than Chrome, then we all would naturally shift to Mozilla, even if the difference is by 1 second or margins of that. So that is a very important concept, and that is where time and space complexity comes in handy. You need to understand the concept, the big O's of how the program is running. After that, you can start to learn the basic data structures, arrays, linked lists. These are the base of data structures, and using these, many more data structures can be used. Arrays, strings, linked lists would be the starting steps. After that, we could go to some complex ones, queues and stack, heap, which are already made on these arrays and linked lists. They are the basic data structures, arrays, and the complex ones are queues, stacks, and heap. After that, when you are proficient enough, and by what I mean by proficient is that you have your hands-on practice for doing these questions from the platform which I mentioned earlier. Now that you have done some questions, had some practice, you can move on to trees, heap, graph. These are a little tougher. See, there is this misconcept कि data structure तो रटना पड़ेगा. ऐसी जरूरत नहीं है. आप normally भी अगर शुरुआत से practice करते रहें, if you do one question daily, which is more than enough. अगर आप पूरे एक साल भी one question daily करते हैं, which would take hardly half an hour, if it's a good level question, so you would be having more than 200, 300 questions by the end of the year, and that would really make you an expert. अभी मैंने भी 300 question पूरे नहीं किए. And moving on, after we have learned graphs, trees, and heaps, we start with algorithms. As mentioned earlier, algorithms are basically a recipe of how the program would work and how things need to unfold when you write the program. Algorithms can be of different type, namely searching algorithms, your breadth first search, depth first search, sorting, कोई array दे दिया उनको ascending, descending order में sort करना. These are all algorithms and how to go about that. Optimizing things. आपका program slow है, उसको fast करना है, कम memory ले. So these are the things that data structure will provide you and give you that sense of problem solving, which will come in very handy in industrial experience. After that comes dynamic programming. It includes memory allocation and using memory while programming. And after we are done with all of this, after you have learned the programming language and done DSA for about 2.5 months, then you can jump into the different websites like Lead Code, Geek for Geek, Code Chef, Code Forces. All these are very helpful in giving you experience and give you competitive edge over other people.
you will be able to do competitive coding, about which you will understand later in the session. And yep, after that you just need to keep practicing. DSA कभी खत्म नहीं होगा जब तक placement नहीं आती, या उसके बाद तक भी. You just need to keep doing questions. So that will be all from my side. I wish you the best, and over to the next speaker. Hello everyone, good afternoon. Now we will see the mistakes that you can avoid while learning DSA. So first mistake will be coding isolately. मतलब generally लोग ये करते हैं कि अकेले अपना कोडिंग कर रहे हैं, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, किसी से पूछ नहीं रहे, कहीं स्टेप पर जा रहे हैं. तो ये नहीं करना चाहिए. हमेशा मतलब किसी सीनियर से डिस्कस कर लें या कोई अपने फ्रेंड ग्रुप में हमेशा कोड डिस्कस करें. उसके बाद सेकंड मिस्टेक हमारा फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट विदाउट लर्निंग बेसिक डीएसए. सबका मतलब शुरुआती कोडिंग में सबका रहता है कि मुझे कोई डेवलप करना है, ऐप बनाना है या वेब डेवलपमेंट ही करना है, मशीन लर्निंग करना है. तो वो बिना बेसिक डीएसए के आप उतना ऑप्टिमाइज तरीके से कर नहीं पाएंगे. तो उसके लिए जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसके लिए आपको बेसिक चाहिए कि हाँ ये मेरा कोड ऑप्टिमाइज हो, मेरा ऐप जो अगर कोई बनाया है वो कुछ काम करे. वेब डेवलपमेंट में बेसिक आप बना सकते हो वेबसाइट, लेकिन कॉम्प्लेक्स वेबसाइट में हमेशा बेसिक डीएसए यूज करना पड़ता है. उसके लिए डेवलपमेंट से पहले बेसिक डीएसए आना चाहिए. एंड नेक्स्ट फिर ओनली कोडिंग अलोंग विद द वीडियो लेक्चर एंड नॉट ट्राइंग देमसेल्फ. लाइक हमने कोई कोर्स लिया तो उसका कोड के साथ जैसे वो स्टैक पढ़ा रहे या क्यू पढ़ा रहे, तो स्टैक का हम लोग सब ऑपरेशन वीडियो में देख देख के कोड कर रहे हैं. फिर लेकिन अलग से खुद से कर दिए हैं तो हम लोग बस कॉपी पेस्ट करना आ गया, लेकिन एक्चुअल कोडिंग करना नहीं आता, उससे प्रैक्टिस नहीं होती तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. नेक्स्ट हो गया जस्ट लर्निंग एंड नॉट प्रैक्टिसिंग. या फिर हम लोग पढ़े जा रहे किसी प्लेटफॉर्म पर, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, तो फिर प्रैक्टिस का सॉल्विंग एबिलिटी नहीं आता, लॉजिकल एबिलिटी सोचने का नहीं आता. फिर से खुद से फिर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई नया एल्गोरिथम, कोई नया डेटा स्ट्रक्चर सीख ही नहीं रहा है, इससे ग्रोथ नहीं होता है हम लोग का. नेक्स्ट हम लोग फोकसिंग ओनली ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग रादर देन ऑन लर्निंग कॉन्सेप्ट. हम लोग का रहता है कि अच्छा रेटिंग आ जाए वेबसाइट से, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. लाइक अगर कोई कॉन्सेप्ट हम लोग स्टैक अगर लर्न किए हैं तो उसका क्वेश्चन की हाँ पैरेंथेसिस मैचिंग आ गया, हमको प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आ गया, लेकिन हम लोग को स्टैक यूज उसमें क्यों किए, वही स्टैक का ऑपरेशन क्यों हम लोग कॉपी वाला यूज किए, मैच किए, तो कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते. उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट सीखे फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दें. फिर नेक्स्ट आ गया सिक्स्थ मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, नॉट यूजिंग पेन एंड पेपर. अब कॉलेज में आ गए हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो लगता है पेन एंड पेपर का क्या चाहिए आपको, फिर सिर्फ सब चीज लैपटॉप पे होगा, सब चीज कंप्यूटर पे कोड करेंगे. ये बहुत ही ज्यादा गलत होता है. हमेशा कोई भी अगर कुछ कर रहे हैं पेन एंड पेपर पे हमेशा लिखे करना चाहिए. सूडो कोड लिखे या प्रोसेस लिखे या फ्लो चार्ट बनाए, पेन एंड पेपर एकदम मस्ट यूज करना ही चाहिए. कुछ भी उसके लिखे थे. सेवंथ रीडिंग एडिटोरियल एंड वाचिंग सॉल्यूशंस. लाइक हम कोई प्लेटफॉर्म या लीड कोड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं डीएसए का डेटा स्ट्रक्चर का, उससे 5 मिनट देखे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, तुरंत जाके एडिटोरियल देख लिए कि हाँ ये शायद ऐसे बनता है और उसको बस कोड कर लिया. उससे आपका सोचने की एबिलिटी नहीं बढ़ेगी, वो सिर्फ उतना ही आ जाएगा कि हाँ आप देख के बना सकते हैं, उससे एबिलिटी कुछ ग्रोथ कुछ नहीं होता. फिर 8th हो गया नॉट रीडिंग अदर ऑप्टिमाइज्ड कोड. अब कोई क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने कोई बनाया, उसका कॉम्प्लेक्सिटी आपका ज्यादा है, दूसरे का वही बिग ऑफ एन स्क्वायर में कम कर दिया, तो वो सही नहीं होता. तो आज 9th पॉइंट हो गया नॉट बीइंग कंसिस्टेंट. बहुत लोग करते हैं कि हाँ एक दिन बहुत एकदम मोटिवेटेड फुली मोटिवेटेड आ गए कि हाँ आज तो 10 वीडियो देखनी है, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और अगले 5 दिन तक कुछ नहीं. ये तो खैर ये तो आप लोग जेई निकाल के आए, ये तो पता ही होगी कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चीज होता है. कम करें लेकिन रोज करें, कंसिस्टेंटली करें. नाउ ओवर टू द नेक्स्ट स्पीकर शेरिंग. So why should you do DSA? इतनी सारी चीज़ें हम लोग ने सुन ली हैं, तो बट रीज़न क्या है क्यों करना चाहिए DSA? So the first thing is to write efficient and optimized code. You know what defines a good programmer, what separates a good programmer from a bad programmer is the way he writes his code. Is it efficient? Is it optimized or not? So a good programmer writes code that is efficient. You know, Google and other websites,
they have, they're so optimized right now, and they keep on optimizing as the users keep on increasing. There are millions of users using Google, Amazon. So उनकी main problem क्या होती है? They don't need to build anything. They just need to make it more optimized and more efficient as the number of users keep on increasing. तो Google जो अभी seconds में थे, कम seconds में search कर देती थी चीज़ों को, कुछ साल पहले ऐसा नहीं होता था. So it keeps on increasing its optimization. So that is the main need of today's time. And the second reason is to solve real world problems. So DSA में, what are we solving real world? As in, we do, if we have a large data set, so उसमें से हम लोग को कोई चीज़ search करनी है. Then if we do it by a normal way without having a knowledge of DSA, we'll take a lot of time. But if we use it by doing binary search, assuming that the data set is sorted, it will reduce the time by a lot. So DSA is इसका भी use होता है real world problems में. And you've seen a Rubik's cube. तो Rubik's cube में जो होता है, if we do it by, we can use the concepts of DSA like the Dijkstra's algorithm, और उससे काफ़ी easily with the least number of moves we can solve the Rubik's cube. And there are a lot of applications of DSA in real world. So Facebook and LinkedIn में we use graphs. The graphs में जो mutual connections, how do we find out mutual connections in Facebook and LinkedIn? जो graphs की nodes होती हैं, the closest components. We find out the closest components, and that's how we use graphs in Facebook and sites like LinkedIn. Or we use queues. The concept of first in and first out is used in WhatsApp. So all these small things which are used by us, these are really fascinating, and these are all based on the concepts of DSA. So the next thing is to be better at development. Development में a lot of people, they just skip DSA. उनको WebD करनी है, ML करनी है, and Android. But to be honest, both of the things are required. DSA and development are both required to be a good developer. So जैसे कि we use websites. So nobody wants to use a website that takes a lot of time to load up. And how would we make a website better? By using the concepts of DSA, we'll make a website load faster. And similarly for apps may nobody would use an app that keeps on lagging or बहुत time लग रहा है. तो using DSA, you'll be better at development. अगर DSA करते हो, ML में भी for fetching data, DSA is required. So both of these things are required for development. And the next part is to crack the interviews for the top product-based companies. The top product-based companies like Amazon, Google, they test the knowledge of DSA. That is the only thing that matters for companies like Google, Amazon, or Flipkart. Nowadays they don't even check the knowledge. They don't even see your degrees. In many countries, you must have heard, people get hired by Google, the bank, without even a degree because they have a good knowledge of DSA. So that is, that tells you how much important DSA is for getting placed by these companies. So for next, DSA for on-campus and off-campus placements. So both for job चाहिए तो DSA करना ही होगा. We all know how important DSA is. Job के लिए, next slide please. So this is the scenario. Samsung, ये इस साल का scenario है on campus का. Samsung did mass recruitment for 14.5 LPA, and there are many of these Samsung is product based, and the rest of them are service based. So Amazon recruited 5 to 10 interns, SDA interns this year. So and there are many other recruitments still going on. So that's it. Over to COVID. Hello, hi, this is COVID, and I'll be talking about competitive programming. So in competitive programming, you are basically given a few problems and you have to solve these problems in a limited amount of time. So as soon as you start DSA,
you can also start with competitive programming because the basics are only required at starting. So these problems will actually based on DSA, data structures and algorithm, the problems they give you in the contest. So, and they will also require a little bit of logic and a little bit of maths as well. So now to start with CP, you have to just in each website there's a filter for beginners. So like in CodeChef, you can choose beginner tag problems, and in Code Forces you can choose 800 rated problems. So you can just start solving them, and uh, rather than watching videos on how to start, you should just like बस चालू कर दो, उसी से होगा. And yes, here I have written some pros and cons. So yeah, if you do CP, you will improve your problem solving skills. And yes, अगर if you become really good at it, you will like ये काफी rewarding competitions होते हैं, Hashcode and Kickstart. So yeah, you will काफी benefits मिल जाएंगे अगर तुम बहुत ही अच्छे हो गए तो. और ये तुम्हारी स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि ये सारे टाइम कॉन्टेस्ट होते हैं, तो यू हैव टू डू देम फास्ट. सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्टर. सो या तुम्हारी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी. और यही कोडिंग राउंड्स होते हैं, ऐसे टाइप के कोडिंग राउंड्स होते हैं तुम्हारे कंपनीज के. सो अब इसके कॉन्स हैं क्योंकि इसमें ये काफ़ी वास्ट हो जाता है. तो बेसिकली इसके अंदर कॉन्स हैं कि ये बहुत टाइम ले सकता है और बहुत पेशेंस भी चाहिए इसमें. एंड अगर तुम एवरेज ही रह जाते हो तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा. So कोई कुछ बोल रहा है? इसमें मैं बस एक एडवाइस देना चाहूँगा, छोटी सी एडवाइस, दैट इसको ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. कोई भी तुम्हारी सीपी नहीं देखेगा कि इसने कितनी सीपी करी है. तुम्हारा सब लोग जो कंपनीज हैं वो सिर्फ डीएसए पूछते हैं. सीपी बस एक एक्स्ट्रा कह सकते हैं हम कि वो बेसिकली एक्स्ट्रा है जो कि तुम्हें बेनिफिट कर सकती है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इसके अंदर प्लेटफॉर्म अगर मैं कुछ रिकमेंड करूँ तो बस कोड फोर्सेस है. कोड फोर्सेस बेस्ट है. उसके ऊपर लाइक पूरा वो सीपी के लिए ही डेडिकेटेड है. और अगर तुम्हें लीड कोड करना है, अगर तुम्हें डीएसए करना है, तो वो उसके लिए लीड कोड एक प्लेटफॉर्म है, वो है उसमें. एंड रिसोर्सेज, आई विल शेयर दीज रिसोर्सेज आफ्टर दिस सेशन. थैंक यू. Now I would like to call upon Anzal to share us some resources required to get started with DSA. So about resources, as such, we'll provide you a list of resources that are curated, which we have used and all the seniors have used. First of all, I would like to recommend about the courses that you should take upon for DSA, that like Abdul Bari and GFG Placement 100. Also, I would recommend doing Lead Code Daily, and what is called the Bible of DSA programming is Geeks for Geeks. So you have to surround yourself with these kind of resources. And other resources, I guess, we'll provide it in the community. Is Sheroz here? Yes. So Good afternoon, everyone. So would you like to tell about the resources more? तो शेयर कर दो यार. हाँ, ऐसे ही बता दो. अगर शेयर करना है शेयर कर दो. If you want, you can share your screen. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes. हाँ. गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम शहरोज आलम. ये जानने के बाद जो कि डीएसए क्या होता है और हमें क्यों करना चाहिए, उसके बाद एक ख्याल आता है कि हमें कहाँ से करें, किस रिसोर्स से करें. तो ज़्यादातर जो बंदे करते हैं कि यूट्यूब पर नए जाकर ढूंढते हैं, तो उसमें समस्या आती है कि हम किस वाले रिसोर्स से करें. तो वो दिक्कत करते हैं कि हमें यू वाला भी आ रहा, ये वाला भी आ रहा. तो इसमें होना चाहिए कि हमें इस वाले रिसोर्स को अच्छा करना चाहिए. तो उसमें जो अभी तक देखा गया, जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारा अब्दुल बारी सर वाला, जो हमारे सीनियर कर चुके हैं और अभी अब हमारे साथ कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अब्दुल बारी सर का ये जो. उसके बाद ये और अदर जो जैनी लेक्चर भी बहुत बंदे यूज करते हैं. जैनी लेक्चर भी अच्छा है अगर आप पढ़ना चाहो तो, जो भी. उसके बाद ये ऊपर आप चाहो सिंपल स्निपेट भी एक रिसोर्स है, आप इससे करना चाहो तो कर सकते हो. एक पैप कोडिंग है जावा में. अगर आप पहले से जावा करे हो तो आपको कोई, अगर आप जावा में ही करना चाहते हो तो पैप कोडिंग बहुत अच्छी है. इसके लिए एक रिसोर्स जो ये फ्री रिसोर्स है. एक फ्री कोड कैंप है, ये भी
ये इसके लिए कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक्स तो नहीं होती, लेकिन जो कर चुके हैं पहले कोई भी लैंग्वेज, तो वो उसी लैंग्वेज से करा तो अच्छा रहता है उसके। ऐसे हमारे एक कोड विधार्य ये है सी में, अपना कॉलेज है वो C++ में करा हुआ है, वो भी अच्छा है। जो बंदे पढ़ चुके हैं वो बताते हैं। एक अनुज भैया और लव वेबर का ये कोर्स अभी चल रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप अगर चाहो तो इनसे भी कर सकते हो। उसके बाद जब आप अगर इनसे भी आपको समझ में आए तो कुछ होते हैं पेड कोर्स जैसे ये रहे, आप कोडिंग निंजास या कोडिंग ब्लॉग्स या यूडेमी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ साइट्स होती है, सबसे ज़्यादा जो साइट्स यूज होती है GFG की। इस पर आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, उन्हें कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर कर चुके हैं तो उसके बाद आपको नीचे आकर आप लीड कोड की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, कि लीड कोड से हमें नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, उनको हमें सॉल्व करने की एबिलिटी अच्छी होती है। तो आप जो प्रोवाइड हो चुके हैं, आप जैसा करना चाहते, सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो होता है अब्दुल बारी सर का ये। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Shairoz. Shairoz, you can stop sharing. So we are open to doubts now. If you have any doubts, you can write them in the chat box. Like we have one doubt here. Data compression algorithms. Yeah. So, Vidip, you would have seen you are learning React. I know that personally. So in React तुमने देखा होगा कि जब तुम प्रोजेक्ट बना लेते हो तब तुम फिर बिल्ड करने के लिए जाते हो ताकि एक छोटा सा मिनिफाइड बिल्ड बने, which is reduced in size as compared to the original project. तो उसके लिए एल्गोरिथम जो यूज होते हैं वो प्रिमिटिव एल्गोरिथम यूज होते हैं कंप्रेशन के। उसमें इंक्लूड होता है LZ77 ऐसा बहुत बड़ा नाम लग रहा है, पर उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्लाइडिंग विंडो यूज करते हैं। इसमें होता है ऑफसेट, रन लेंथ और डिविएटिंग कैरेक्टर्स। तो LZ77 इज अ कंप्रेसिंग एल्गोरिथम जिसको उन लोगों ने मॉडिफाई एज सच ऑप्टिमाइज कर दिया, और जिसमें LZR, LZSS, डिफ्लेट, LZMA 2, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बेस्ड कंप्रेशन, ये सब ऐड हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है कंप्रेशन एल्गोरिथम्स का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे .7zip तुम लोगों ने सुना होगा, फाइल का टाइप होता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ती है, देखा होगा कभी कोई प्रोजेक्ट लोन वगैरह किया होगा तो। हाँ, तो वो इसी से क्रिएट होता है एल्गोरिथम्स को यूज़ करके। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो हॉफमैन कोडिंग पढ़ेंगे, वो एकदम बेसिक टाइप है, उसी से डेवलप हुए हैं आगे के एल्गोरिथम्स कंप्रेशन के। सो दैट्स इट अबाउट कंप्रेशन एल्गोरिथम, जिसमें डीप नहीं जाएंगे क्योंकि अभी सब स्टार्ट कर रहे हैं डीएसए। विदाउट डेव, देखो अगर तुम्हारी डीएसए अच्छी होगी तो वो डेव सिखा देंगे तुम्हें, बट अगर कॉलेज का टाइम है, तुम्हारे पास 4 ईयर्स हैं, तो एक साइड स्किल डेवलप करना अच्छी बात है। वेब डेवलपमेंट हो, मशीन लर्निंग हो, एंड्रॉइड डेव हो, या कोई भी हो, ब्लॉकचेन हो गया, वेब 3.0 हो गया, तो अच्छी बात है अगर इसको डेवलप करें स्किल्स को, तो अपने ही काम आते हैं बूस्टअप से सीवी। मोहसिन, अगर डीएसए जो मेनली जो होती है, जो व्हाट डू वी से, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो सिर्फ डीएसए चेक करती हैं, लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं और जो नॉर्मली कंपनीज होती हैं वो दोनों की नॉलेज चेक करती हैं। स्टार्टअप्स दोनों अगर 2 क्वेश्चंस डीएसए के पूछ रही हैं तो 2 डेवलपमेंट के पूछेंगी। तो ऐसा नहीं है कि दैट यू कैन डू विदाउट डीएसए, दोनों ज़रूरी है। फॉर यू टू बी अ गुड प्रोग्रामर, कोडिंग करने के लिए डीएसए भी करो और साथ में डेवलपमेंट भी करो। सो दैट्स योर डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, can you share the drive of DSA? Yeah, we'll share you the resources after the session. You'll get a drive link जिसमें हम लोग सारी resources send कर देंगे। ऐसा रिसोर्सेज का ओपन में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि दिस विल गो ऑन यूट्यूब, और सो रिसोर्सेज का विल शेयर यू लेटर ऑन द कम्युनिटी, परेशान मत हो। विद ग्राफ्स, डीएसए, जिरिक्सा एल्गोरिथम और ग्रीडी एल्गोरिथम में ये तुमको क्वेश्चंस करके ही ठीक होगा कॉन्सेप्ट, और पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ को विजुअलाइज नहीं इतने अच्छे से कर पाओगे, लिख लिख के करो आराम से। I think Himan had a question. किसी भी डेवलपमेंट के लिए वेब डीएसए नेसेसरी है ना? मतलब आई थिंक कंफर्मेशन मांगा है। हाँ, नेसेसरी है। डीएसए के साथ उसका एप्लीकेशन कहीं कर रहे हो वो जरूरी है, जैसे वेब डेव हो गया, एमएल हो गया, एंड्रॉइड डेव हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, तो जरूरी है एक साइड चीज, वरना तुम किस उनके लिए क्या ऑफर करोगे? ओनली डीएसए? तो भी कंपनीज तुम्हें हायर करेंगे, स्टार्टअप हायर करेंगे।
Is it possible to become a good developer without knowing DSA? Developer बनना आसान है, but good developer means that Good you should be developer able to optimize your code, and optimization comes with when you have knowledge of DSA. हाँ विदीप, AVL ट्री और ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं. ऐसे AVL बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट ग्राफ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. If you have any more questions, you can ask it in the chat box or use your mic. We'll have an interactive session. अगर कुछ भी अरे पूछना हो तो अंजल be भाई, open. मेरा एक क्वेश्चन था. हाँ भाई. जैसे कि इंटरव्यू जो होता है, ठीक है, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया, वो प्रायोरिटी क्यू का हुआ, ठीक है, तो उसमें लाइब्रेरी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं C++ HTML का, या वो स्क्रैच से कोड लिखाते हैं? डिपेंड करता है वो तुमसे इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं प्रायोरिटी क्यू का, या फिर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का, या फिर वो तुमसे डिराइव करवा रहे हैं कि उसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो. दोनों तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं. एक होता है कि पूरा तुमसे बनवाएंगे और उसमें यूज केसेस देंगे कि अगर ये हो जाए, और तुम्हें एक अपना प्रिमिटिव फंक्शन यूज करके लिखना है, या फिर बोलेंगे कि चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ स्क्रैच से, नाइव अप्रोच से बिल्कुल ऑप्टिमाइज तक. ओके, थैंक. डीएसए पढ़ना स्टार्ट करने से पहले लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, बट स्टार्ट कर दो, वो साथ में हो जाएगा. जो मैंने जनरली जो सेशन में देखा, लाइक रिसोर्सेज में C++ एंड जावा के बारे में ही बात हुई फॉर लर्निंग DSA. व्हाट अबाउट पाइथन? मतलब डू यू हैव एनी ओपिनियन? स्टार्टिंग से पाइथन करना इज नॉट अ गुड क्या बोलते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि पाइथन बहुत शॉर्ट कर देती है चीज़ों को. वो अंडरलाइन चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर देती है पूरी तरह से, अब्स्ट्रैक्ट कर देती है, सॉरी. तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझ नहीं आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट यूज हो रहा है. पाइथन में कुछ डिराइव्ड नहीं है, क्योंकि पाइथन खुद C और CPP पे बना हुआ है. तो अगर कहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए दे दिया कि अब जैसे पाइथन में डिक्शनरी क्रिएटेड है पहले से ही, अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया कि क्रिएट अ डिक्शनरी, तो वो कैसे बनाओगे? वो तो यूज करने के लिए तुमको जो एकदम डेटा सेट्स के पास हो, लैंग्वेज जो कोर को छूती हो. Like, wouldn't they ask questions pertaining to that language? मतलब कोडिंग ना, इंटरव्यू लैंग्वेज डिपेंडेंट क्वेश्चंस नहीं होते. मतलब लाइक जैसे डिक्शनरी है ऑलरेडी, तो ये क्वेश्चन पाइथन में पूछेंगे नहीं ना. मतलब टू द इंटरव्यू नॉट, मतलब एग्नोस्टिक रहते हैं क्या हम लोग इंटरव्यू देते वक्त? हाँ, वो तो पूछेंगे, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं ना तुम्हारी लैंग्वेज डीएसए में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं. कि अगर तुम्हें पता है कि बना वही कैसे बना है, अगर तुम्हें कोई इम्प्लीमेंट करना हो उसमें कुछ ट्वीक्स करके अंदर लाइब्रेरी में ही चेंज करके उनके यूज के हिसाब से, तो कैसे करोगे? कि कुछ फंक्शंस चेंज करना हो, कुछ ऑपरेटर्स अंदर चेंज करना हो. अंजल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है. जैसे हमने DSA CPP में कर लिया, मतलब अगर जैसे मैं डेवलपमेंट के लिए मैं चाहता हूँ जावा स्टार्ट करूँ, मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, तो क्या उसमें DSA ना जरूरी है क्या? मतलब उसमें भी, या फिर देखो, उसमें DSA डेटा स्ट्रक्चर्स तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हैं. डेटा स्ट्रक्चर में खुद लैंग्वेज आती ही नहीं है, वो तो इम्प्लीमेंटेशन पे है कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो. बस थोड़ा सिंटैक्स चेंज होगा. तो तुम अगर डीएसए पहले से कर चुके हो तो तुम्हें पिकअप करने में डिफिकल्टी नहीं होगी. तुम देखते जाना ऑल्टरनेटिव्स क्या है C++ के अलावा जावा में. I would like to add something. आपने बताया कि आप C++ में शुरू किया एंड आप जावा वगैरह के लिए पूछ रहे हो. अगर आप कोई भी लैंग्वेज में शुरू करते हो, अगर आप कोई भी लैंग्वेज एक बार कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपको लैंग्वेज स्विच करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. लैंग्वेज बेसिकली सेम है. अरे इसमें भी सेम होगा, उसमें भी सेम होगा, ग्राफ्स वगैरह सब चीज सेम होंगी. आपको मुश्किल से 15 days लगेंगे. एंड C++ एंड जावा आर ऑलरेडी वेरी सिमिलर इन टाइप्स ऑफ इन syntax. मैं C++ में करता हूँ, but I can understand the Java code very easily, so there won't be any problem. Similarly, interview में भी they would ask you first कि आप करोगे क्या, and that would be language independent. उसमें आपको language नहीं बतानी, उसमें आपको अपना algorithm बनाना है कि आप problem को कैसे solve करोगे. उसके बाद when he asks you to code, तो आप कोई भी जो आपकी preferred language है आप उसमें code कर सकते हो. C++, Java, be it Python. Mostly Python पूछते नहीं है, क्योंकि उसमें libraries already use हो जाती है, तो algorithms almost खत्म कर देता है वो. Sort की algorithm नहीं पढ़नी, sort सीधा लिख दो. So that is why Python is not preferred for interviews. I hope I could clear it. Yes. तो फ्यूचर में जो डिफरेंसेस हैं, अगर C++ और जावा में से कोई प्रेफर करते हो, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं. वो तुम्हारे पाथ पे डिपेंड करता है
कि तुम क्या चूज कर रहे हो, कि अब कोई अगर ओएस लिखना चाह रहा हो तो सी या सीपीपी या फिर रस्ट में लिखेगा। Ansel, मतलब हो there's जाता a repetitive question. किस लेवल तक कोडिंग आनी चाहिए टू गेट स्टार्टेड विद डीएसए? ये repetitive है। एज question. सच लेवल का मतलब ये है कि तुम्हें बेसिक सिंटैक्स पता हो, इनपुट आउटपुट का अंदाजा हो कि हाँ इनपुट लाइन फॉर्मेटिंग पता हो कैसे करनी है, तो फिर शुरू कर सकते हैं। सिंटैक्स आना चाहिए, एटलीस्ट ऊप्स तो नहीं, बट अगर आता है सिंटैक्स लिखना आता है, कोड कर लेते हो नॉर्मल जो होता है बेयर मिनिमम, तो स्टार्ट कर सकते हो। एरेज भी तो डेटा स्ट्रक्चर ही है ना, एरेज तक अगर कर लिया तो फिर आगे के डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर दो। तो ओप्स वैसे रिक्वायर्ड है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ओप्स तो डेवलपमेंट में फिर भी रिक्वायर्ड है, तो कहीं अभी ना कहीं करना ही पड़ेगा। और ऊप्स थोड़ा सा बाइफरकेटेड पाथ हो जाता है डीएसए से, बट करना अच्छी बात है क्योंकि आगे काम ही आता है वो काम आता है। ओके, इन अ लॉन्गर रन। आई होप डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब और कंफ्यूज हो जा रहे हैं सब। Chat box में एक मैसेज है कि I have basic knowledge of Python but not of C++. Can I move on further with Python itself? I think for DSA. डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए आई वुड प्रेफर के सी प्लस प्लस भी सीख लो, अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। सी तो पढ़ना ही पड़ेगी, करिकुलम में भी है, तो सी प्लस प्लस कर लो। पाइथन को भी साथ में कंटिन्यू रखो। There's one more question. In future, I want to go with development. What should I prefer for DSA, C++ और Java? तो ये basically हमने आंसर कर दिया है, like both दोनों सिमिलर है ना अंजल? हाँ, इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसके। आप जो भी आपको प्रेफर्ड होता है आप उसके साथ कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद आप डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद आपके यूजेज पे डिपेंड करेगा। स्विच करने में इतना इशू इसलिए नहीं होता, सिंटैक्स अगर आ गया, बदला पता चल गया कि हाँ ये चीजें होती हैं और ऐसे होती हैं, तो उसको किसी भी तरह से लिखने में क्या इशू आएगा। इट्स जस्ट लाइक हिंदी इंग्लिश वाला टाइप हो गया कि लैंग्वेज आ गई है ना, तो बस लिखना है। There's a question from Hamid Ehsan. पैकेज, अरे भाई अभी पैकेज की चिंता मत करो, पैकेज तो हमें भी नहीं मिला है अभी तक। तो अभी तो काम कर रहे हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे एंड्रॉयड हो, उस पर ध्यान दो एकदम, उसमें स्किल्स को एकदम पॉलिश कर लो। इतना वर्स्ट केस मत सोचो यार। अच्छा अभी तुम्हारे पास टाइम है, अगर उसको कंप्लीट कर लोगे ना तो वर्स्ट केस पे क्या आने की जरूरत नहीं, बेस्ट केस तक पहुंच जाओगे। भाई कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, डिपेंड्स कितना ज़्यादा तुम अपने आप को क्या बोलते हैं उसमें प्रेशराइज करते हो कि हाँ कंसिस्टेंसी रखना है, कि नहीं कि 5 दिन किया फिर छोड़ दिया 1 महीना। डीएसए रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये मैच की तरह है। डीएसए जितनी प्रैक्टिस उतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट। Okay, so we are running short of time. We can take up the other doubts later. We'll take a 5-minute break and start off with the WebD session. और कोई क्वेश्चन So, हो तो फील फ्री टू ऐड इन कम्युनिटी। community group is open for any type of questions you need. I posted the link in the chat box. We'll take a 5-minute break and start off with the web development session to begin at 3 p.m. Till then, Anzal, you can take up the questions in the chat box, like you can answer them in the chat box. या श्योर। फेमस टाइम कंस्ट्रेंट की अगर पूछ रहे हो तो आई गेस अगर पूरा तुम्हें डीएसए कवर करना है इन थ्योरी तो 3 महीने तो थ्योरी रख लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस रख लो 3 महीने 4 महीने की स्लो प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं। कॉन्सेप्ट लर्न करके फिर प्रैक्टिस, फिर नया कोई कॉन्सेप्ट दिख गया तो प्रैक्टिस, फिर उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करना है तो फिर समझ लो 1 साल का तो रख लो। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो।
उसके बाद डेव का सेशन होगा, तुम उनमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कैसे डीएसए काम आएगी। You can stay in the meet for the web dev session, or you can join at around 3 p.m. Thank you. It was a very interactive session. थैंक यू टू द लिसनर्स आल्सो, काफी देर तक रहे सब। Also, thank you to the DSA team for like it was a great session. भाई एक डाउट है मेरा, बता दीजिएगा फिर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। डाउट ये थोड़ा सा हमको पूछना था कि हम 10th ICSE से किए हैं, ठीक है ना भैया? तो उसमें मेरा जावा था, तो जावा हम उसी समय 10th के वक्त ही बहुत अच्छे से लिंक लिस्ट तक एकदम पूरा अच्छे से कर चुके थे, कोई भी क्वेश्चन बन जाता था। लेकिन जब से जेई में उतना अच्छा नहीं गया, यहाँ जामिया में आए, कोशिश करते हैं ना, नहीं बन रहा भैया। 3 महीने से हम कर रहे हैं, मतलब वो जो 10th में थे उस लायक भी नहीं बचे हैं, ऐसा लग रहा है। अरे तुम डिमोटिवेट मत हो, जेई था हो गया, वो था रह गया है अब। और हम भी आईसीएसई से ही हैं, हमने भी जावा ही पढ़ी थी पहले। तो अगर क्वेश्चन नहीं लग रहा तो परेशान मत हो, वो कॉन्सेप्ट या फिर वो एक होता है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, वो थोड़ी सी हिल डुल गई है। तो तुम एडिटोरियल्स जब एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओ तब एडिटोरियल पढ़ो, ऑप्टिमाइजेशन देखो कैसे किया है, अपनी नाइव अप्रोच से कंपेयर करो कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, फिर स्लोली पेन एंड पेपर से तुम उस सॉल्यूशन तक पहुंचो। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस कर करके डेवलप होगी, और 3 महीना भी हुआ, कोई इशू नहीं है, परेशान मत हो। जी भैया, वही खराब लगता है ना कि 10th में ज्यादा जान रहे थे, अभी कोशिश भी कर रहे हैं फिर भी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो रिकवरी में चले गए, वो भी वापस आ जाएगा सब। स्किल तो तुम्हारा ही था ना, सेम ही पर्सन हो तुम। सबके साथ होता है ये, बहुत बार ऐसा आता है कि क्वेश्चंस नहीं होते, टाइम आता है, होने लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अभी लगातार नहीं लग रहे हैं, अभी एक टाइम ऐसा आएगा जब लगातार लगने लगेंगे वापस से। थैंक्स भैया। अरे कोई इशू नहीं। Different type of theories for graph and trees, DFG indirectly run कर सकते हो, तो are recommended। हाँ, वो तो कॉन्सेप्ट पे आ गया ना कि तुमने अगर कर लिया है डीएसए और शार्प करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो अब 3 o'clock, नाउ वी विल हेड ओवर टू वेब डेव सेशन। Hello everyone, welcome back again. Now we will start off with the web dev session. So I'll call upon Hussein, who is the head of the web dev team, to take over and start off. Hello everyone. I'm audible, right? Yeah, you are audible. Yeah. So I'm Hassan Shahid Rao from second year BTech. So WebD के बारे में, हाँ, full stack WebD का। Fazan, can you move on to next slide? Go into slide 3, yes. हाँ. So शुरू करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि WebD करना क्यों है. So first of all, it's easy to begin with and it's very fun and exciting to work with WebD. क्योंकि एक तो if you have any idea or any sort of idea of an app, और जैसे तुम ML कर रहे हो या DSA कर रहे हो एंड तुम्हारा कोई आइडिया आया कुछ स्टार्टअप का कुछ, तो you should know how to implement it, how to prototype the thing. So उसके लिए you must know a little bit of WebD. Secondly, highly active and evolving community. WebD में क्या है, आए दिन नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसे DSA में भी है, यू हैव एल्गोरिथम्स जो बहुत पहले रिसर्च करके लिखी गई हैं। ML में भी ML का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट WebD में यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। एंड WebD में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली इस टाइम। You can get lots of internships and part-time jobs, freelancing, etc. And they have a decent pay. It's easy money for a side job. Or cross-platform unity. WebD में if you want to develop apps and websites, you can develop. You don't have to learn Android development and then the desktop development differently. WebD में you can do it all in one. Okay, so. Yeah,
Can you move on to the next slide? Yes. So हाँ bare minimum discuss करते हैं. Bare minimum में ये है कि like what are the minimum things, minimum requirement for you being a web developer. So I think शोएब को कॉल करूँगा इसके लिए डिस्कस करने के लिए. शोएब. Hello everyone, I'm audible. Hello everyone, I'm Shoaib Ilyas from second year civil. So first we have front end. वेब डेवलपमेंट में हमारे पास दो पाथवेज हैं, एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है. फ्रंट एंड इज कंसर्न्ड विथ हाउ योर वेबसाइट लुक्स and feels and how it responds to user inputs and whether it is mobile responsive or not, etc. इसमें हमारे पास तीन बिल्कुल कोर टेक्नोलॉजीज होती हैं. सबसे पहले आता है HTML, which is the structure of the web page, how many divs are there, how much text is on the web page, how many buttons are there. And next जो important चीज़ आती है वो है CSS, जो कि it specifies where the button will be placed, how the different elements will be positioned and styled on any web page. So they are related with how your web page is structured and styled. Next is JavaScript, which is basically used for DOM manipulation if you are using these three technologies. For example, and making a web page functional. For example, if you have some data that you are fetching from the API, we'll talk about the API further in the session. So you want to parse that data, and for example, you have some data related to students of 2020 batch, and you want to display them in a tabular format. So let me just clarify that here we are not at all concerned with how the data is stored, where the data is stored. We are just concerned with the data that is being fetched from the API. So it's also a part of UI only. So you fetch the data from the API and you parse that data and then display it in a tabular format. So to make this website functional, we use JavaScript. And next slide, please. Then we have the backend, which is the server-side programming. It's here we have a server, server is nothing but basically a computer on the internet where all our data is stored. For example, if we have a blog website, so the users' data and the different blogs, all the data related to that is stored on the server. We use Node.js for server. There are different technologies, but as far as the session is concerned, we are concerned with Node.js. So we use Node.js, which is a JavaScript-based backend programming language. It is used for server-side programming, and we use it to fetch data from the database and then send back to the client. And for that, we use API. API is nothing but a bridge between the client and the server, because you don't want anyone to manipulate the server directly. So we use an API, which is a bridge. API client makes a request. API gets the request, gets the data from the database, and then it sends it back to the client. So this is what the API does. And then we have the database, which is storage. Database is a storage. Is an organized storage of data on the server. So for that we can use either NoSQL databases or SQL databases. For SQL databases, Excel is a good example, and for NoSQL databases we have MongoDB and Atlas, which is a object-based object. You can say object-based storage. When you learn further about this, you will understand the difference between NoSQL and SQL databases. So these are two different types of database. The next slide, please. And some miscellaneous things that you should be knowing as far as basics are concerned. HTTP is you should know about how network request works, what are headers, what are cookies, tokens, about the cross-origin request policy, and a little bit about TCP/IP also, which Hussein will speak in further in the session. Then we have hosting, how to host your
host your website on the internet using Heroku Netlify Firebase. And then we have Git. Git is I don't think it should be in the miscellaneous, but it is very important as far as development is concerned. Uh, Without it, there is no development basically. It is a version. Git is a version control system where it is a version control system where we Hussein, can you please help me on this one? It's a little bit Yeah, I difficult for me think to define. BCS. So यहाँ पे I think GitHub use कर रहे होगा ज़्यादातर लोगों ने. So Git and GitHub like helps you. It's basically called a time machine for programmers. So if you have a code which you want to go revert back to, it helps a lot in that. Like yeah, it simply allows you to go back in the past to previous versions of your code. Yeah, right. So without Git, it is also used for different programmers can collaborate on a single project without sharing, without having the pain to share different files manually. For example, if you're not using it, you might use Google Drive to share files, which is very painful. So Git is it is a very efficient solution for different programmers to collaborate and then work on a single project. Next slide, please. Yeah, we have some resources. First resource is the developer.mozilla.org, which is it has everything related to front end, back end, and all. You can say if you are not using other resources, then you can put your trust in Mozilla, the MDN, and you can also learn all of the web development from here. But I would not recommend it because the language is a bit technical, so you need some mentor or guide to help you first understand the basics, and then you can jump on to mozilla.org. And Udemy is also a good website for different courses. It has great courses available, and you can they are paid courses, so but the price is not very high. It's like 300 500 courses. If you can afford it, I would recommend that you should definitely afford some courses related to backend or front end. And Traversing Media is also, he's a great guy, or he has a channel on YouTube. All his content is free, although he has some courses on Udemy also. But on YouTube, all his courses are. He has some courses on YouTube also, and some great videos related to all the web development stuff. And one more thing is one more resource is frontendmentor.io. I'm sending the link in the chat. Frontendmentor.io. It's a website where you can go, and it provides you with the prototype of a website, different types of website, and then it provides you a prototype, and then you can use that prototype to then create your own project based on that prototype. So it's a practice website for those who are learning web development. It's inclined towards front end more. So yeah, it's inclined towards front end only. So if you are interested, you can go and practice and make some amazing projects from there also. Next slide, please. Yeah, so Hussein will guide you from here. So yeah. So पहले जैसे आप लोगों ने अगर मान लो HTML CSS JavaScript पढ़ लिया basic like the minimum when you complete with your minimum requirements. So I would suggest कि you should make some projects without watching any tutorials or something of your own. Like कोई भी random idea उठाओ, कुछ भी उठाओ, and कोई project बनाओ उससे, like get your hands dirty with it. So like ऐसा नहीं कि सब tutorials देख ली या फिर theory पढ़ ली and then you move on. So like make some projects, like not too much complex projects, but थोड़े बहुत 2-3 छोटे projects. Then we move on to like the real game part, like the technologies we use in real world. So to the next slide please. So front end में जब जैसे beginner part में you will use plain CSS for styling. Like and you will realize कि CSS का कोड बहुत जल्दी बहुत unmanageable हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है.
So for that, you have different libraries like Bootstrap, Tailwind, Dua. So it helps you to write to like easily implement nice looking components. It has pre-built components which you can use in your code. Then we have front end frameworks like React. इसमें ये एक्चुअली थोड़ा लाइक बेसिक जिनको आते हैं उनको समझ में आएगा ये वाला पार्ट कि जैसे HTML में you have different components जैसे बटन हुआ वेबसाइट का या you have a form, you have an input box. So React में क्या होता है it make your website those components reusable. And इससे React में your whole website is dynamic. So इससे कोड एक तो बहुत क्लीन हो जाता है सिंपल लैंग्वेज में it makes your code very very clean and development process काफ़ी फास्ट हो जाता है. So रियल वर्ल्ड में कोई भी HTML CSS यूज़ नहीं करता. Nowadays React या फिर उससे सिमिलर फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं. Then फ्रंट एंड में आपको CSS लाइब्रेरी और React यूज़ करना आ गया. Then you can use learn some animation libraries for making some beautiful websites. But ये तभी अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड में जाना है तो. So to the next slide please. हाँ then backend में Wiki when to learn frameworks like that. ये I think अभी क्वेश्चंस ले सकता हूँ तो छोटे when to learn frameworks. बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही ना दादे? नहीं कंटिन्यू. फ्रेमवर्क्स बेसिकली जब आपको बेसिक्स ऑफ HTML CSS आ गए हो लाइक यू नो के div क्या होता है उसको सेंटर कैसे करना है. सबसे मुश्किल चीज़ CSS में div को सेंटर करना होता है. सो लाइक तुमको अगर DOM एलिमेंट्स के बारे में पता है या HTML CSS JS so yeah I think you can start learning React. It's not that difficult. So backend में first you really need to use Linux. You don't have to use the operating system per se, but you do need to know the command line tools because like going forward you will have to host your websites and knowing Linux command line really helps. And I think for computer science students it's part of the course also, the syllabus. The TCP/IP network, this part will Shoaib explain because to be honest, I also don't know much about networking. Then the Redis caching, actually Redis, the caching comes after you have learned databases. When you are fluent with databases like Mongo or SQL, then you have to learn about caching. So Shoaib, can you explain the networking part? Yeah, sure. So networking में अगर when you are making chat applications or anything which is related to networking, so इसमें कुछ important चीज़ें होती हैं जो you need to understand, you need to have a base, you need to have a grasp on the concepts. For example, TCP/IP, at least इसके बारे में same knowledge तो होना चाहिए. TCP/IP जैसे है तो there are the rules related to how data is transferred along the internet from one server to the other, और पैकेट्स HTTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. और SSH तब है जब तुम लिनक्स यूज़ कर रहे हो. और नेटवर्किंग लेयर्स क्या होती हैं अलग अलग, कैसे तुम्हारा डेटा सॉफ्टवेयर से फिर वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है. वेब सॉकेट्स इज़ इम्पॉर्टेंट जब हम सॉकेट IO के साथ काम कर रहे हैं, चैट एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो उसके लिए मतलब वेब सॉकेट IO एक्चुअली बेस्ड है वेब सॉकेट्स पे, बट कुछ ज़्यादा डिटेल हो जाएगी. बट मेन बात ये कि हम जब वेब सॉकेट्स है, जैसे हम वेब सॉकेट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम ऐसा एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में कि जो हमेशा ओपन रहता है, और हम एक रियल टाइम कनेक्शन बनाते हैं. जैसे गेम्स हम खेलते हैं तो, या हम चैट कर रहे हैं किसी, तो रियल टाइम कनेक्शन बना रहता है. अनलाइक HTTP जिसमें हम एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर डेटा आता है, फिर वो कनेक्शन क्लोज हो जाता है. तो रेडिस कैशिंग आता है. रेडिस एक्चुअली लो लेटेंसी के लिए यूज़ होता है जब हमें रियल टाइम डेटा के साथ काम करना होता है, तो उस चीज़ के लिए रेडिस यूज़ होता है. और रेडिस में हम कैशिंग जैसे है तो कैशिंग फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रिक्वेस्ट है जो बार बार हम भेज रहे हैं सर्वर को, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फेचिंग इंस्टेड ऑफ रीफेचिंग द डेटा फ्रॉम द सर्वर, हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, सो विल स्टोर दिस डेटा, दिस रिजल्ट, एंड जब दोबारा ये रिक्वेस्ट आए तो देन send it back to the client without reaching onto the database. So Redis का और भी uses होते हैं, but
अभी कैशिंग वगैरह है तो इतना ही है, which you will mostly be concerned with. फिर स्टैटिक मॉडल बंडलर है, तो इसमें यह है कि जब हम फॉर एग्जांपल बहुत सारी हमारे पास JS, हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं और HTML और CSS की फाइल्स हैं बहुत सारी, तो अगर हम डायरेक्टली उसे शिप कर देंगे सर्वर पे तो इट इज़ परफॉर्मेंस इंटेंसिव। तो उसके लिए हम मॉडल बंडल्स यूज़ करते हैं जो कि मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स को कंप्रेस करके एक सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल बना देता है, मिनिफाई कर देता है उस पूरे प्रोजेक्ट को, और सिंगल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स बना के फिर उसको हम वो बना देता है जो कि बिल्ड हमारा फाइल होता है, और फिर हम उसे वो शिप कर देते हैं होस्ट करने के लिए। तो वो एक्चुअली परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से वो इम्प्रूवमेंट होता है। ऑन टू सेंड। Yeah, I think Anzal discussed about the building of projects in DSA wale part mein. So that's what Webpack does, static model bundler. The next are some design tools जैसे Figma हुआ या Canvas. So you have to know, like, you have to design first कि how your website will look, how your product will look. So you must know, like, you must have a little knowledge of designing tools like Figma. And the next very important thing is Auth. You must know how to log in the user if you want to make a basic website. So for that, you have some libraries like Passport.js or some technologies like JWT tokens. So yeah, that's an important part too. So itna aane pe you are a mediocre developer. You can build anything you can imagine of. Like koi bhi idea you can implement it. So इसके बाद जैसे तुम लोगों ने यहाँ तक अगर सीख लिया है, या रिसोर्सेज पे आई विल कम लेटर, so यहाँ तक पे अगर तुमने सीख लिया है, सो मेक अ लिटिल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जिसमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो, लाइक फॉर एग्जांपल डेटाबेस यूज़ हो, और UI उसका काफ़ी अच्छा और यूजेबल हो, एंड ऑप्टिमाइज कोड हो, जिसके लिए तुम्हें DSC की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत एटलीस्ट. सो या इतना आने पे make 2 or 3 some like a little complex projects. And if you want to get some ideas like for making projects, you can participate in lots of hackathons. Say MLH पे hackathons होती हैं कई सारी, so you can participate in those. They have like lots of different themes, etc. So I think yeah, इतना mediocre developer पे हो गया. I think इस point पे थोड़ा overview देना better रहेगा इससे आगे बढ़ने पे. So overview के लिए मैं एक बार orally दे देता हूँ, slides ही होते हैं. So you start with HTML, CSS, JavaScript, ठीक है. HTML, CSS, JavaScript बिल्कुल बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए कि DOM एलिमेंट्स क्या होते हैं. एकदम स्टैटिक पेज बनाओ, जो लाइक जैसे 1900s की वेबसाइट होती थी उस टाइप की वेबसाइट बनाओ एक. फिर लर्न a good amount of CSS के you know how the flexbox work and how the box model, what is the box model, ये चीज़ पता होनी चाहिए. उसके बाद JavaScript से play around with JavaScript में you can do a lot of things and it's exciting to work with क्योंकि इसमें इतनी सारी possibilities होती हैं कुछ करने की. You can use lots of different APIs. काफ़ी you can go on GitHub and search for free APIs and you will get lots of APIs. इसमें काफ़ी interesting चीज़ें बना सकते हैं. उसके बाद you need to learn कि server का use कैसे करना है, how the APIs work, how the HTML requests work. उसके बाद you have to learn Node.js या फिर कोई भी server sided language. I prefer Node.js क्योंकि वो उसके लिए तुम्हें नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती, कोई जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही है वो. सो बैकएंड सीखने के बाद सिंपल थोड़ा बहुत बैकएंड सीख लिया, उसके बाद यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज डेटाबेसेस इफ़ यू वांट टू स्टोर डेटा, बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट में डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है. डेटाबेसेस सीख लिया उसके बाद देन यू कैन गो ऑन टू लर्निंग रिएक्ट एंड एक्सेट्रा. सो या आई थिंक यहाँ तक तुम सीख लो. यहाँ तक सीखने में अराउंड इट टेक्स like for me it took about an year or so. So yeah, इसके बाद Faizan, can you move on to the next slide? You can take up questions. Like there are some questions. हाँ, अच्छा questions yeah. I think यहाँ से bash वाली जो basic command होती है वो सही है. deep level नहीं, you actually don't need to go like really deep for in Linux command line.
you need to know the basic command, how to navigate the file structure using command line, how to edit documents, and etc. Like the basic stuff, not too deep. If you are in computer science branch, they will actually teach you all the things you need to know, almost everything. There's one question from Vicky. When to learn frameworks like React, etc. Yeah, I know. I answered this one. I think. Okay. Is React on Next.js same? So yeah, let me answer this one. So what React does is it actually is a client-side render language. Let me like explain this in simple terms. React is basically a JavaScript library. उसमें तुम जब अपना code लिखते हो JavaScript में लिखते हो. You don't write plain HTML in this. So, but the browsers cannot understand your the React code. So for that, it needs to be compiled. So what React does कि वो JavaScript code compile करती है and then it puts that code into the DOM, the HTML part of the page. So इससे क्या होता है कि जो तुम्हारा ब्राउजर होता है या जो बॉट्स होते हैं सर्च इंजन के, they cannot see the content of the page until it's rendered on your page. So Next.js क्या करता है? It does the same. It does the rendering process on the server. So जब तुम fetch करते हो, you have the like plain HTML CSS code. So इससे क्या होता है कि जो bots होते हैं, they can actually read the content of the page before the page is rendered. So it helps in search engine optimization, in simpler words. Basically, React, you first need to learn React, but then if you want to make a product like for a startup or something, then you have to use Next.js for it. I think that answered your query. Any more questions? And may I know, and मैं पूछ सकता हूँ, हेलो क्या हाँ, जो उसमें और भी तो हुक्स में और पार्ट आते हैं, जैसे यूज इफेक्ट या यूज स्टेट के अलावा भी यूज इफेक्ट या यूज कंटेंट, मतलब ये भी साथ में कर लेना चाहिए ना? तुम रिएक्ट सीख रहे हो तो रिएक्ट का ही पार्ट हो गया वो यूज सारे हुक्स उसके. ओके. तो मतलब इतनी या तो वो मतलब हुक्स के ही एक पार्ट हो गया, यूज इफेक्ट, यूज कंटेंट एंड ये सब. या इट्स ऑल द पार्ट ऑफ द हुक्स. React में specifically you need to learn at least hooks and then the React router, and then like you can learn Redux, but like it's the minimum requirement. I think it makes your work a lot easier. And as for the resources, I think these three are my favorite YouTube channels: the Fireship.io and the NetNinja and CodeTime. If you are really into web development, I recommend you subscribe these channels. And for me, Udemy was also a big help. So if you can afford the courses, I really recommend to buy them, because if you buy a course, you are inclined to complete it. So it's a good motivation. The WebD Pro part. A quick disclaimer: I'm not a WebD Pro, so I don't have a very much good idea, but I have a little bit idea, so I can at least tell you what things you need to learn if you are planning your career in WebD. So next slide. I think these things are used only for if you are developing your code for production or for a fairly large user base. So you need to know some basics of Nginx or Apache. These are basically the server handling tools. And then you need to know a little bit of cloud computing. You need to know GCP or some cloud service like GCP or AWS if you want to host your website. And then a little bit of you need to know what is the containerization is if you want to contribute in open source per se. So the lot of the repositories and the softwares use Docker for the Docker is basically has pre-configured dev environment as it's written over here. So it makes easier for the dependencies to be installed. And then you have to learn a little bit about testing if you want to maintain your code nicely.
But these things are only for those who are actually looking to develop their career in WebD. You don't need to learn these if you are just exploring the field. I think that's it for. And as far as personal just projects are considered, you won't be using all these Yeah. technologies most of the time. Maybe if you're building a large project, but 99% of the time you won't be using these technologies. But if you're, yeah, as Zen said, if you want to make a career, then do go for it. So basically, this is a part of the professional aspect of web development, right? So yeah, production based is other. Yeah. Like, or if you have a really great idea and you think might attract a lot of user base, so consider learning these. At least get a little bit of idea. I think, yeah, that's it for the slides. Now, if you have any questions, queries, you can ask. There's one question from Arish. One should develop a habit of using Sass, or is it okay to use? It's absolutely your choice. If you are using a UI library, you will be rarely using CSS. Like as you learn more advanced, WebD, you will be using less amount of basically bare bone code. Like you will be using less vanilla JavaScript or less CSS. Actually, Sass is pretty good because CSS is very clumsy, to be honest. It's totally up to you. It's your choice. Please provide resources for UI UX. I think Shoaib is pretty good in UI UX, so he will help you out with it. How to know? Yeah, how to know what's trending in web development and cache budgets, and then किसमें jobs in GitHub community send. So if you wanna like to know what's trending, I think the good source is YouTube. Be subscribe the channels I told you because they upload really good and updated content, and try to take part in open source. It's a bit hard to get into, to be honest, but open source is a really good place to learn a lot of new things and how to structure your code really nicely. So try to take part in like competitions like Gsoc, etc. Actually, I'm still trying to take part in Gsoc, so So what are the requirements for participating in Gsoc means? Actually, I'm not. The requirements are not that. You just need to know a little bit of development, to be honest. But again, I'm not a Gsoc participant, so I can't say much about that. Means like I have started WebD since January. Now I'm learning React, so could I participate in that? Actually, you can, but it's a little difficult because, like especially in India, they have it's a lot of competition. So yeah, I think personally, I think you need to have about a year of experience with React and like whatever technology you're using with. Any other doubts? इंटर्नशिप के लिए पूछ रहा हो? ओपन सोर्स इंटर्नशिप के लिए बेसिक कितना आना चाहिए, प्रोजेक्ट्स किस लेवल के होने चाहिए? ओपन सोर्स में तुम यूज करते हो काफी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी, तो सो लाइक लुक इनटू देयर रेपो एंड इफ दे मैच विद योर टेक स्टैक, ट्राई टू कंट्रीब्यूट, or you can Google for good first issues. Good first issues are basically easy issues which you can contribute to, beginner level issues on GitHub. Just Google get good first issues and you will get the results. And for internships, to be honest, like you don't need to be really pro at what you do because it's an internship, it's not a job. So to be honest, internship is not about how much you know. I think my experience had been it's about managing your like college with the internship. It's basically the managing work like work-life balance. Internship itself is for learning purposes as well. So yeah,
बेसिक लेवल का कराता है जो अभी स्लाइड सेशन बताया था वो कराता है तो इट्स गुड इनफ फॉर टू गेट इन इंटर्नशिप। Yeah, you can take part in the internship if you are beginner. That's what I'm saying. Like beginner in React or in Node.js, not HTML CSS because no one uses HTML CSS at this moment. One stack, basic level. Yeah, one stack. Internship कैसे ढूंढ I personally used Internshala in the past. You can also contact with seniors, like Jamiya seniors are really helpful. या और इंटर्नशिप्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है तुम्हारे कनेक्शंस कितने ज़्यादा हैं सीनियर्स के साथ और अलग अलग सेम फील्ड के साथ तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इंटर्नशाला के थ्रू भी है बट लाइक वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है competition and they sometimes try to exploit you, so be careful with that. Yeah, make you pay instead of paying you. I came across many posts. They say that IIT में internships and all, मतलब उसमें apply करना ठीक रहेगा क्या? I don't think actually most of those posts use IIT as a hot word. That's all. Actually, recently मेरे साथ भी एक ऐसा But हुआ the कि research एक internships are good, I teacher think. हाँ रिसर्च इंटर्नशिप्स आर गुड। Yeah. आईआईटी एफिलिएटेड कोर्सेज जो होते हैं वो बेकार होता है, वो मत करो। वो नहीं करना ना क्योंकि रिसेंटली भी बोला कि पहले 1 महीने ट्रेनिंग कराएंगे एंड फिर प्रोजेक्ट फिर उसने बोला कि वो तो आई थिंक पेड ही होते हैं, तुम्हें पैसे देने होते हैं। Yeah, I never opt for a paid internship. It's always sort of a scam. अच्छा वो स्कैम है ना? Yeah, never pay like for these kind of things. Okay. नाम भी बोल देते हैं, वर्जियो नाम की कंपनी है एक, वो भी कराती है। भी है। Like it doesn't make sense कि तुम ही काम कर रहे हो and then you are the one paying. लाइक जब हम जूनियर से सब भी आई थी वर्जियो आई थिंक हमारे टाइम पे, बट वो भी आई थिंक आईआईटी एफिलिएट करके नाम बस बताती थी एंड पेड इंटर्नशिप्स कराती थी, सो डोंट ऑप्ट फॉर दैट। Yeah, LinkedIn is a very good option. You can ask any type of doubts you have either in the chat box or you can open your mic. We are open to questions. I think I think there are yeah. If any related to DSA, then you can also ask. भाई MSN में internship कैसे लगेगी भाई? DSA करो। DSA करो, DSA करो, DSA। I think हाँ WebD जो भी कर रहा है ये मत सोचना कि लाइक तुम्हारा WebD से काम हो जाएगा। DSA is the must. मैं WebD का member हूँ तब भी कह रहा हूँ कि you should know a little bit of WebD but DSA is a lifelong thing. जब से तुम कॉलेज में आओ जब तक नहीं जा रहे हो कॉलेज से तब तक तुम्हें DSA करना ही है। मतलब बिग कंपनी में तो DSA ही पूछते हैं। Projects के example for portfolio internship. Projects example. What's a bot? Like actually I think तुम ये खुद से सोच के करोगे तो it would be better. Like let your imagination run wild instead of के Google मत करना के good ideas और वो। I think it's better कि खुद से कुछ सोच के बनाओ। जो भी तुमने सीखा है अब तक कोशिश करोगे जो भी तुम्हारा नया प्रोजेक्ट हो वो सब एक तरह से उसका मिक्सअप हो। ऑल्सो हम ट्राई की नेट से कॉपीड ना हो सके, मतलब कोड कि लाइक जैसे मैनेजमेंट सिस्टम हो गया कोई, वो बहुत आराम से कॉपी हो जाता है। लाइक कुछ जेनरिक चीजें मत बनाओ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, समथिंग एक्साइटिंग टू वर्क। पोर्टफोलियो वेबसाइट जरूर बना लेना। और टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक नहीं बनाई पोर्टफोलियो वेबसाइट, बट हाँ बना लेनी चाहिए। तुम भी बना लेना। इंशाल्लाह। न्यूज़ API वेदर ऐप
ये तो लाइक फॉर प्रैक्टिस ठीक है, स्टार्टिंग में बना सकते हो, वैसे स्टार्टिंग में डाल सकते हो, स्टार्टिंग के में सब यही बनाते हैं, स्टार्टअप्स सोचते होते हैं। एटलीस्ट एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट तो साहिर होना सही कह चाहिए। रहा है कि जैसे तुम्हें किसी भी टूल की जरूरत पड़े, सो फिर ना मिले तो बना लो खुद का। ट्राई टू ऑटोमेट थिंग्स यूजिंग WebD. Any more questions? Anything related to DSA or anything related to web development? Anything माइक ऑन related करके to, पूछ लो जिसको भी पूछना है। anything related to academics, not the reopening part. आई थिंक ये तो DSA का सेशन में कवर हो गया था। हाँ शहबाज, तुम्हें रिसोर्सेज का कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर रिसोर्सेज का यू विल गेट अ डॉक्यूमेंट, उससे गेट स्टार्टेड विद इट। रिसोर्सेज भेज देंगे शहबाज। Any more questions? I guess no more questions. ये वो शहबाज भाई पूछ रहे हैं, तो कंप्लीट अगर तुम्हें कोर्स चाहिए तो कोई अब्दुल बारी का ले लो या फिर GFG का प्लेसमेंट 100 कोर्स आता है वो ले लो, उसमें कंप्लीट है चीज़ें, तुम्हें आगे के लिए भी मिल जाएगा OS वगैरह के लिए भी। Okay, so now we are coming to the conclusion of the session. Tomorrow we'll have one more session at 2 p.m. We'll have the Android and MLAI roadmap sessions. So please be sure to join them. At the same time, like it will start from 2 p.m. Good afternoon, sir. आपका सेशन बहुत अच्छा था। माई सेल्फ फैयाज अहमद। तो मैं 2 घंटे से सुन रहा था आपका सेशन। तो हमारा एक सजेशन ये था कि जो आपने अभी प्रेजेंट किया ना, उसमें थोड़ा सा PPT का कुछ कंटेंट थोड़ा डालें, क्योंकि वहाँ पे स्लाइड जो विजिबल हो रहा है बिल्कुल ब्लैंक हो रहा है आपका। तो थोड़ा सा जो क्यूरियोसिटी है बच्चों का, जो हमारा है, हम देख रहे हैं, तो हमें दिखाई तो नहीं रहा, वर्बली हम ऑरली हम आपकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसका PPT में अगर कंटेंट हो तो थोड़ा सा बेटर होगा ऑडियंस को सुनने में। Okay, sir, we'll take up your recommendations. I think you should also share the PPT in the group. Yeah, will do. Actually, Aitasham, Lal Bihari Pandey will take up Android session under IEEE CS. Ijlal will take a separate session. It will just be a roadmap session, like how to get started with Android, and Ijlal can continue on with the core aspects. ML will be taken up by Mohammad Kashif, second year CS student. Please be sure to join tomorrow at 2 p.m. I think we can end the session here. Thank you for joining. Thank you to the WebD team for preparing the slides. It was a great session. Thank you, everyone. Thank you. Meet you all tomorrow. Thank you, sir, for attending the session. Thank you, sir. Okay, bye-bye.